Hello friends, welcome to my channel Priya's Creative Gallery. So in today's video we'll be making a wall decor using an old plate. तो इसके लिए आपको चाहिए होंगे कलर्स. So you can use chalk paint or acrylic paint, whatever you have. So let's get started. सबसे पहले हम प्लेट को पूरा पेंट कर लेंगे. आफ्टर पेंटिंग यू कैन कीप इट फॉर ड्राइंग. चॉक पेंट बहुत ही जल्दी सूख जाता है और आप देख सकते हैं अगर आपको दोबारा कोटिंग की ज़रूरत पड़े तो आप उस पर तो एक कोट और कर सकते हैं. नाउ आई हैव ड्रॉन पैटर्न्स हेयर. मैं इसमें पीकॉक ड्रॉ करूँगी जो कि वर्ली आर्ट से इंस्पायर्ड है. आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं.
Now I will use some embroidery mirrors. आप चाहें तो मिरर्स यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको पेंट से ही और डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसमें मिरर्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मिरर्स से इसमें एक अच्छा इफ़ेक्ट आएगा और हमारी प्लेट बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। So you can stick the mirrors using a Fevicol as I am doing in the video. As you can see how beautiful the plate is looking. लेकिन मुझे बॉर्डर्स पे अभी कुछ और भी ड्रॉ करना है, तो मैं इसमें पैटर्न्स ड्रॉ कर दूंगी। आप चाहें तो यहीं पर भी इसको एंड कर सकते हैं, ऐसे भी ये प्लेट बहुत सुंदर लगेगी। And our wall decor plate is done. I hope आप सबको वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वॉल डेकोर प्लेट कैसी लगी है। एंड अगर आप भी ऐसी वॉल डेकोर प्लेट बनाते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। माई इंस्टाग्राम हैंडल लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन चेक आउट देयर एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो. Do subscribe to my channel and also hit the bell icon so that you get notifications of my latest videos. Thanks for watching everyone.